वेलकम टू चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स। यू आर वाचिंग फरमान खान इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम बात करने वाले हैं एंजाइम्स के फंक्शन के बारे में, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो बेसिकली हमारे पास दो मॉडल हैं, एक लॉक एंड की मॉडल और दूसरा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो लॉक एंड की मॉडल इट वाज प्रपोज्ड बाय फिशर एंड द इंड्यूस्ड फिट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय कॉशलैंड। तो अब अगर हम बात करें लॉक एंड की मॉडल की, तो बेसिकली इन लॉक एंड की मॉडल, for example, we have an enzyme and this is the active site of enzyme. After that, the substrate comes towards enzyme and binds to this active site. In case of lock and key model, this active site is rigid. That's why substrate and enzyme, both of them should have great specificity towards each other so they can bind to each other. उसके बाद अगर बात करें इंड्यूस्ड फिट मॉडल, तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंजाइम है दिस, एंड द सेकंड वन इज ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। द एक्टिव साइट ऑफ इंड्यूस्ड फिट मॉडल एंजाइम, the active site of enzyme in case of induced fit model is flexible तो मोड़ सकती है। it may undergo conformational changes according to substrate। तो इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत वैरायटी ऑफ एंजाइम्स को ये बाइंड कर सकता है। But in case of lock and key model, there the specificity of enzyme towards substrate is very low। तो अब बात करते हैं कैसे इनकी फंक्शनिंग होती है। So now the lock and key model, the mode of action of enzymes in lock and key model. Suppose we have an enzyme this, and a substrate this. In the case of lock and key model, the enzyme and substrate both looks like the lock and key. The substrate looks like key and the enzyme looks like a lock. The key can be easily fitted in the lock. Now, both of these when come together, they are highly specific to each other. उसके बाद जब ये आपस में bind करेंगे, this is the active site. This is the active site of enzyme and this is the substrate. When these two binds, they results into enzyme substrate complex। एक नया कॉम्प्लेक्स बन गया, क्या कह रहे हैं हम इसे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहां सबस्ट्रेट आके बाइंड कर गया और ये है हमारा पहले से एंजाइम, तो एक ये नया कॉम्प्लेक्स बन गया जिसे हमने कहा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इट मे अंडरगो सेवरल चेंजेस, आफ्टर दैट इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड अगेन द एंजाइम रिटेन्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन, फिर से अपनी वही पोजीशन में आ जाएगा जैसे एंजाइम पहले था। सो दिस इज द लॉक एंड की मॉडल। नाउ विल डिस्कस द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ओके, नाउ द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल बेसिकली, सपोज इफ वी हैव एन एंजाइम somewhat looks like this and a substrate that is look like this। एक हमारे पास एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, इसे यहां आके बाइंड करना है। दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जहां ये सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। बट द कन्फर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड द कन्फर्मेशन ऑफ एक्टिव साइट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये क्या करेगा, जब ये इसके पास आएगा, इट विल अंडरगो सर्टेन कन्फर्मेशन चेंजेस। As I already told you, the active site of enzyme in case of induced fit model is flexible। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फ्लेक्सिबल। अगर हम
इंड्यूस्ड फिट मॉडल की बात करें तो जैसे ही ये इसके पास आएगा इट विल अंडरगो सेवरल कॉन्फॉर्मेशन चेंजेस और ये इससे बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद में फॉर एग्जांपल ये बाइंड किया, और ये कुछ ऐसा दिखने लगा। इसकी जो एक्टिव साइट थी वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई। ये सबस्ट्रेट है हमारा, ये एंजाइम है, और दोनों ने मिला के एक नया कॉम्प्लेक्स बनाया एंजाइम substrate complex. Now, this enzyme substrate complex undergoes certain changes and results into the formation of product. The product is formed. Let's suppose this is the product, and again this enzyme again regains its original shape or original position like this. This is the induced fit model. The most important thing in induced fit model is that the active site of enzyme in induced fit model is flexible. It may undergo several conformation changes, and the substrate binding specificity in induced fit model is very high. It can bind to a lot of enzymes. Thank you. After that, we'll discuss the factors affecting enzymes functioning and several other topics related to enzymes. So please like, share and subscribe for more videos. Thank you.